All right. Good morning, everybody. I hope you can see me. I hope I'm clear. I hope I'm audible. Please let me know. This is for Mphil. This is for UPSC Applied Psychology. This is not for NET. This is not for NET. UPHESC also requires this. Other state exams also require this. This is not required for NET. Good morning to all of you. Happy Diwali to those of you who are still celebrating. I'm Hafsa Malik, and today we learn a little bit about psychopharmacology. Okay. Now psychopharmacology is actually a vast area. ऐसा नहीं है कि एक क्लास में पूरा हो जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं और if you do end up liking the class, आप नीचे कमेंट्स में डाल दो एंड मैं आपको और भी पढ़ाऊंगी इसके बारे में. Good morning, good morning, good morning. How are we doing? I hope we're all doing great. Good morning. Good to see you all. Let's get started. Let's get started. चलिए, it's quite cold here today. I think you already know that. Yeah, I hope you're having a good Diwali. I hope you're having a good time. Let's get started. Good morning, good morning, good morning. Very, very happy to see you all. चलिए, I'm glad you made it to the class. So today we will talk about from a medicinal or medication perspective. तो आज हम साइकोफार्माकोलॉजी की बात कैसे करेंगे कि किस डिसऑर्डर में कौन सी मेडिकेशन दी जाती है और बेसिकली किस किस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है. ठीक है. And then if you, like I said, if you do like this is very, very important for MPhil as well as for UPSC applied psychology, for you to understand what drugs for what disorders, what has what side effects, what is good, what is not, and all of that. ठीक है. चलिए, ma'am, after a long time, it's just been 2 days, but okay. All right, चलिए. Bye, Hafsa Malik. I'm Hafsa Malik. I'm an educator on Unacademy. In fact, the top educator for psychology, for NTA UGC-NET, for GATE, and for everything else. We will talk about everything later. अभी के लिए हम psychopharmacology क्या है ये समझेंगे. चलिए. So we are going to talk about psychopharmacology from a biomedical perspective. आपको पता है कि clinical psychologist भी prescription नहीं दे सकते हैं. Counseling psychologist तो दूर की बात है, right? They cannot prescribe medication. तो हम क्या देख रहे हैं? हम biomedical perspective से देख रहे हैं. जहाँ पे psychiatrist. Ma'am, I want to tell you something. Tell me, Chuchu. Although everybody can see this, tell me. Good morning, good morning. So basically, we are looking at this from a, what do I say? We're looking at it from a clinical psychologist perspective, लेकिन we are looking at the biomedical approach where we have a psychiatrist come in and prescribe medication. ठीक है. बस हम समझ रहे हैं कि इन medications के uses क्या हैं. All right. So what is the biomedical approach and what is the most common treatment according to the biomedical approach? Now we know that biomedical या biological psychology जो होता है, biopsychology जिसको हम कहते हैं, उसमें prominent प्रोपोजिशन या हम ये सपोज करते हैं कि जो भी बॉडी में इम्बैलेंस है वो किसी न किसी बायोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से है या तो कोई ऑर्गेनिक डैमेज है. तो पहले हम ये वर्ड्स को समझेंगे. ऑर्गेनिक डैमेज का मतलब है कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर में, मतलब ब्रेन के किसी हिस्से में है या और कहीं पे कोई डैमेज हो गया है. ओके. ऑर्गेनिक डैमेज मीन्स दैट देयर इज स्ट्रक्चरल डैमेज in either. Okay, Chuchu, very proud of you. No problem. Come back. Now, so there is either a structural damage, there is some kind of damage in the body. And if we talk about a biochemical imbalance, what does that mean? These are the two prominent, components of understanding the biomedical view of illness. बायोकेमिकल मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है. ओके. समवेयर वी हैव अ न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस एंड दैट बेसिकली मींस दैट वी गॉट टू फिक्स इट बाय गिविंग ईदर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट. ठीक है. या तो हम एगोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे या तो हम एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे. अगर न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी या सेंसिटिविटी लो है तो फिर हम एगोनिस्ट का यूज करेंगे. अगर न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी हाई है या हम कम करना चाहते हैं तो हम एंटागोनिस्ट या रिवर्स एगोनिस्ट यूज करेंगे. वो भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. Okay, all right. So we want to bring about bodily changes over here. All right. So we will talk about anxiety disorders के लिए क्या, schizophrenia के लिए क्या. Since this is a psychotic disorder, schizophrenia is still
considered anything which has symptoms of schizophrenia also are considered psychotic symptoms. मतलब delusions, hallucinations, ऐसी चीजें, ठीक है? Catatonia, and things. Sometimes you will see psychotic symptoms in some bipolar disorders also, especially bipolar 1 जो होता है वहां पे manic phase में कभी कभी hallucinations भी होती हैं, कभी कभी alcohol withdrawal से भी hallucinations होती हैं. तो आप देखेंगे कि कोई clear demarcation एक्चुअली नहीं है. ऐसा नहीं कि एक ही डिसऑर्डर के लिए एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन यूज किया जाता है. एंड देन अगेन वी हैव एंजाइटी डिसऑर्डर्स रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, एंड देयरफॉर द medication is also going to differ. These are known as anxiolytics or they are known as anti-anxiety medications. Please let me know if there is any doubt or anything. Today is a chill day since we don't have any other class. You can go ahead and ask. Okay. तो हम देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हमारे पास हैं यहाँ पे. बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस व्हाट एन एगोनिस्ट एंड एन एंटागोनिस्ट इज. ठीक है? तो ड्रग्स जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं हम नहीं करते हैं, साइकाट्रिस्ट डज. बट व्हाट एक्शन डज इट ब्रिंग अबाउट? Okay, an agonist is something which basically goes ahead and either secretes or produces or basically क्या कहते हैं gives out a particular neurotransmitter. लाइक काफी दफा ये एक क्वेश्चन आता है, ब्लैक विडो स्पाइडर, दे राइट ब्लैक विंडो स्पाइडर, बट दिस ब्लैक विडो स्पाइडर is an agonist for what? Gives out all of the acetylcholine in the body in excessive amounts till we die. So an agonist is not something that's going to kill us, but an agonist is something which is going to release a neurotransmitter or is going to increase the sensitivity or the amount of that particular neurotransmitter in the body. ठीक है? हाई एफिकेसी का मतलब है दैट इट इज इजिली गोइंग टू बाइंड टू द रिसेप्टर. ठीक है? लाइपोफिलिक होते हैं जनरली. Most of your agonists or whatever antagonist chemicals, we want them to be lipophilic, we want them to be fat soluble, we want them to have high efficacy, we want them to bind very quickly to the receptor ताकि effective treatment हो, जल्दी से treatment हो. ठीक है? तो ये रहा आपका agonist, which is going to bring about some kind of an, what do I say, excitatory action or the release of a neurotransmitter. A partial agonist, why do we need partial agonists? Now let us say somebody has, hypothetically somebody has out of 100 to 0, अगर हम किसी की एंजाइटी चेक करना चाहते हैं, सोचो इस इंसान की एंजाइटी 20 लेवल पे है. लेट्स से फ्रॉम 0 to 100 anxiolytics, anxiety, 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 so anxiolytics, or not angio. What will you do with angio here? All right, okay. Now, अगर किसी की एंजाइटी लेवल 20 पे है, 0 to 100, तो आप सोचो कि ये एगनिस्ट 90% एफिशिएंसी पे काम करता है और ये 90% इस न्यूरोट्रांसमीटर को एमिट या इसको रिलीज करेगा. सो इज द 100 और अ 90 लेवल अ गुड ट्रीटमेंट हियर? तो क्या हमें एगनिस्ट यूज करना चाहिए? इट्स गोइंग टू बी टू मच. आप देखेंगे, अगर आपको ये पता है कॉमन डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया एंड पार्किंसंस, जिसके बारे में बहुत पढ़ा जाता है, तो देयर इफ यू सी इन पार्किंसंस द सेम न्यूरोट्रांसमिटर व्हिच इज डेफिशिएंट इज वेरी इन एक्सेसिव क्वांटिटी इन स्किज़ोफ्रेनिया, एटलीस्ट द डोपामाइन हाइपोथेसिस इफ यू लुक एट इट. तो एब्सोल्युटली देखिए, यू विल एंड अप डूइंग टू मच, right? That's why in severe cases of medication or improper dosages, schizophrenics will start having Parkinson's symptoms, and Parkinson's patients will sometimes start having schizophrenia symptoms or hallucinations. तो हमें ये समझना है कि adequate dosage of treatment देनी है. So we can vary an agonist to a partial amount. मतलब low dosage पे देंगे हम, lower efficacy होगी इसकी. अगर dosage भी same होगी, efficacy मतलब the way it binds to receptors is going to be a lot lesser. And therefore, we will bring about this 20 to 25 change that is required rather than bringing about a 90% change which is not at all required. Okay? तो partial agonist भी उसी receptor पे जाके उसको activate करता है, but it doesn't have the same level of efficacy. मतलब उसकी उतनी high effectiveness नहीं है, low effectiveness है, लेकिन उतना ही चाहिए. Right? Okay. All right. राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, आप सेम डोज में लो दोनों चीजें, एक की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस या एक्चुअल एक्शन इज लोअर देन द अदर. दैट्स व्हाट मैटर्स ओवर हियर. देन वी आल्सो हैव इनवर्स एगोनिस्ट. इसको एंटागोनिस्ट क्यों नहीं कहते, इनवर्स एगोनिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेम रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है.
Where your agonist goes, your inverse agonist also goes to the same receptor and it binds over there. And then what does it do? It brings about the opposite effect. मतलब अगर ये excitatory हम यहाँ पे कर रहे हैं, then this will bring about inhibitory effect. ये inhibitory effect लेके आएगा ना. Obviously it is intended, है ना. Let's say there isn't, what do I say? Let's say there's excess of a neurotransmitter. You want to bring down the action. So give an inverse agonist, which will go act at the same receptor site, but it will bring down activity. All right. And lastly, obviously, antagonist. These are examples. You can take a screenshot and see later. Morphine and so on are methadone, and all of these heroin are full agonists, maximum capacity. ओके, ऑल राइट. तो ये क्या है? एंटागनिस्ट क्या है? एंटागनिस्ट ऑपोजिट एक्शन लेके आता है. रिसेप्टर साइट इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट? इनहिबिटरी साइट बेसिकली. That is basically it. Now please let me know if you understood agonist, partial agonist and antagonist. आपको ये समझ आ गया तो हम प्रोसीड कर सकते हैं. नहीं समझ आया है तो प्लीज पूछिए. It's very important that you understand. Otherwise, we will not be able to go forward. Okay? Sure, ma'am. All right, Samya. Thanks. Yes, ma'am. Understood. Understood. Chalo. Oh, nice. Now let's look at what an effective drug is and categories क्या है. And I will mark it down right here also कि किस चीज के लिए हम क्या use करते हैं. Okay. The difference between inverse agonist and antagonist. Inverse agonist, does it go to the inhibitory site or does it go to the site of the same receptor where the agonist actually goes? So that could bring about faster action sometimes. Inverse agonist has the same effect as an antagonist but goes to the receptor site of the agonist. That is why we call it inverse agonist. Brings opposite effect but goes to the receptor site of the agonist. That's basically it. Okay. You got to understand that antagonist is not going to go to that site. Antagonist will have a different receptor site. So cute pills, ma'am. Okay, Stuti, thanks. Thanks, I guess. All right. Now, antipsychotics, like I told you, will be used for schizophrenia and other psychotic symptoms. ठीक है. Like कभी कभी जो आपका schizoaffective disorder होता है, it presents itself with the negative symptoms of schizophrenia. Then you have then you also have schizotypal. Schizotypal has delusional thinking. Like I told you earlier, alcohol withdrawal में भी कभी कभी क्या होता है, hallucinations होती है. So there it will be applicable. Antidepressants are absolutely used for what? Major depressive episodes and major depressive disorder. ये bipolar में भी use होगा. Mood stabilizing drugs are especially useful for bipolar or any mood disorder for that matter. Like there is premenstrual dysphoric disorder और भी है ना, साइक्लोथाइमिया, डिस्थाइमिया, वो सारे disorders में ये apply होगा. Anti-anxiety and hypnosedatives. See, anti-anxiety are also known as, what did I tell you? Anxiolytics. Okay? Anticonvulsants are for epilepsy. Epilepsy के लिए देते हैं ये, इससे convulsions नहीं होते हैं, like the fits that people have in epilepsy. Okay, alcohol and drugs of dependence. These I will do separately for you because there is a whole category of disorders which are basically upon substance abuse and substance dependence. And these are really, really fun to study. Narcotics क्या होते हैं, depressants क्या होते हैं, stimulants क्या होते हैं, what are psychedelic drugs. Really fun. I will keep it for another day. Anti-Parkinsonian drugs, you have anti-dementia drugs. Actually, antipsychotics काफी time पे dementia के लिए भी use होते हैं for organic disorders. And then there are other small categories of drugs as well. Okay, antagonist is going to bring about the opposite action that an agonist brings. Agonist अगर एक neurotransmitter को release करता है तो क्या करेगा antagonist? Antagonist उसकी action को inhibit करेगा. Okay, that's basically it. That's basically it. Okay.
ओके, मूवी में आपने देखा है देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट एंड देयर इज एन एंटागनिस्ट, हीरो होता है विलन होता है, आई थिंक लाइक दैट. No, don't think protagonist for agonist, but then antagonist is basically the same thing. Correct. Okay, now what is an ideal psychotropic or an ideal drug? And we've got to understand ये most common mode of treatment है. Even though, you might not hear about it a lot, people also prefer. जो patients होते हैं वो भी prefer करते हैं कि उनको medication दी जाए और वो ये ले लें और वो जल्दी से ठीक हो जाएं. Now, of course, that has its own side effects, and as a psychologist, you got to understand that's not good for business and it doesn't bring long term change, right? इससे लॉन्ग टर्म चेंज ज्यादातर नहीं आती है unless it is used in combination with therapy. You should also remember that if you're writing a descriptive answer. But most patients and the business, the way the world runs, most people prefer pharmacological treatment, prefer pills, prefer drugs, treatment wale drugs, to a long and painful session of therapy. ठीक है? So let's see what an ideal drug or what an ideal type of medicine is. Right? It should cure the underlying pathology. वही तो reason है ना क्यों ले रहे हैं. You want it to make you better. Okay, and we don't want dependency on the drug either. आप अगर देखोगे a lot of drug addicts start with low dosage of morphine. उनको कुछ accident हो जाता है and then उनको morphine पे डाल देते हैं. Okay, and then उनको addiction हो जाती है. A lot of people get पुराने वाले जो anxiety anti anxiety medication आते थे barbiturates, people used to get addicted to those also. Very high level of addiction over there. Antidepressants, sometimes people get addicted and so on. So we've got to understand कि drugs and medicines are addictive. ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अब बेस्ट ये है बट देखेंगे क्या है क्या नहीं है. मैम, इन अदर कंट्रीज पेशेंट्स आल्सो सू देयर साइकियाट्रिस्ट इन केस ऑफ, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है. I think we all understand that well. Yes, and there the pharmaceutical company will have to give in millions of dollars. They'll have to give if they are found liable. यहाँ पे lawsuit will go on for 30-50 years, and then the company will also be down by then, and the person who filed the suit will also be dead. So कोई फायदा नहीं. Anyway, it should benefit all of the patients, right? At least the patients who take it. It should have no side effects or toxicity in the therapeutic range. जो dosage है उसमें कोई toxicity, as in it should not kill people, and it should not have any particular side effects. It should act quickly, मतलब इसकी efficacy high होनी चाहिए. There should be no dependence, इसकी वजह से addiction नहीं होनी चाहिए. Withdrawal भी नहीं होना चाहिए. See, what's the point if you're taking a medicine to cure a problem and the medicine itself gives you a new problem, right? If we end up becoming addicts, अगर हमें addiction हो जाती है medicine की तो फिर कोई फायदा नहीं है. There should be no tolerance. Tolerance का मतलब क्या होता है? जितना जितना आप लेते हैं, जैसे क्रोसिन लेते थे बचपन में, is it as effective as it used to be? Or if you have throat infection, giving you an example. Please don't say tomorrow Hafsa ma'am said throat infection is a mental health problem. So what happens when people have a throat infection? The dosage has to go up because it's like a fungal problem. है ना, तो डोजेज जो मेडिसिन का होता है आप टॉलरेंस डेवलप करते हैं. जस्ट लाइक ड्रग एडिक्ट्स ऑल्सो, व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली they have to up the dosage या up the dosage to feel any high. Likewise, अगर यहाँ पे dosage up करना पड़ा disorder के लिए, that is a huge problem, right? That means we are developing tolerance to the ड्रग. अब वो लेवल जो हम ले रहे थे वो इफेक्टिव नहीं है. धीरे 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 बॉडी को आदत हो गई है इसकी और इसका असर कम 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 होता जा रहा है. Like that. So we should be able to take the same dosage for a very long period of time. ड्रग इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि इससे टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए और इस वजह से सेम डोजेज लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी लीथल इन ओवरडोजेस. ओवरडोज में ये लीथल नहीं होना चाहिए. यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल हु डू कमिट सुसाइड एंड विल टेक एंटी एंजाइटी मेडिसिन. एटलीस्ट पुराने जमाने का बार्बिचरेट्स एंड ऑल ऑफ दैट इज प्लेन ओल्ड स्लीपिंग पिल्स एंड स्टफ. And then therefore they commit suicide like that. Medicine should not be lethal in any dose. It can be given both in inpatient and outpatient settings. So these are all of your conditions.
Especially if you're writing a descriptive answer, it is good to write at least a few of these. I'm mentioning this since I'm giving this for UPSC as well. Chaliye. Then what do we have? Now we will talk about the particular categories if we are good to go. Bataiye ab. We understood what a good drug is. Shouldn't cause withdrawal, shouldn't develop dependency, should have high efficacy, should not develop tolerance. That's basically it. हाँ जी, चलिए ठीक है. Okay, now what is this? If you'd like to come study with me on Unacademy, I'm thinking of starting a batch on clinical psychology. And if there are, many of you who request, I do have a lot of students already requesting. Come message me. I have linked my group also at Net with Hafsa. Come message me saying you want to join the clinical batch. And you can join for Net as well as for clinical. Do use my code if you're subscribing to my classes. That's about it. Honestly, अगर आप join करना चाहते हैं, do let me know if you do join. That way, I will try to get the clinical batch started as soon as possible because I know there's CIP, there's NIMHANS, and this and that coming next year. So November to Feb, I might do a course for you, a 3-month course. Let me know if you would like that. ठीक है. If you want me to cover the whole of clinical and the other important content with it as well. चलिए. Now, first, we start off with antipsychotic drugs. Antipsychotic drugs are very, very clearly going to be used for psychotic disorders. And what do we have over there? We have schizophrenia, schizophreniform, and all of that. है ना? Sare psychotic disorders. And like I told you, schizoaffective and schizoaffective. Schizoaffective and schizotypal sometimes as well. Now, here, do you need to know the name? Not really, not in my opinion, unless it's like very, very particular, like haloperidol and stuff, very, very popular ones. उससे ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं देखा है. I have not seen anybody ask, unless you're writing like your final exam of Mphil and all. Okay. चलिए psychotic symptoms में इनको use किया जाता है. Now there are also sometimes amphetamines are also used to increase concentration, to improve what do I say, to improve activity and all of that. But that's a recent addition over here. So Haldol or haloperidol and thorazine are very, very popular drugs over here. They are highly lipophilic, मतलब फैट soluble हैं ये, और ये प्रोटीन्स के साथ जल्दी जल्दी बाइंड करते हैं, है ना? तो जल्दी से ये ब्लड सप्लाई में पहुंच जाते हैं, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, and here. Now here, why the fetus is mentioned here is not probably great to take it for a pregnant mother, right? And they accumulate there as well. Now, what disorders are they going to be used for? For delirium. आपको पता है delirium क्या होता है? Dementia के onset से पहले generally there's going to be a few days of confusion period. ओके ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में आता है, ओल्ड एज डिसऑर्डर्स में आता है, जहां पे देयर इज एन अटर कंफ्यूजन, फीवर जैसा स्टेट होता है, कुछ समझ नहीं आता है पेशेंट को, तो ये छोटी छोटी डोजेस में दिया जाता है. ओके नाउ डिमेंशिया इज द होल कैटेगरी एक्चुअली ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स. What is very, very common over here? Behavioral agitation, like you see, like very, what do I say, क्या कहते हैं इसको, like protesting, wanted to get out of the house, fugitive behavior, things like that. जो Alzheimer's के common symptoms होते हैं, अगर वो सारा कुछ है, then it is appropriate to give these, sometimes prescribe these medicines, okay? Or any psychotic features in case it is accompanied by hallucinations or anything like that. उसके बाद delirium tremens is particularly hallucinations due to alcohol withdrawal. जब कोई अल्कोहल क्विट करने की कोशिश करता है, अगर आप देखेंगे इसमें भी क्या कहते हैं इसको, यू हैव योर कोर्साकॉफ्स एंड स्टफ, उससे पहले भी दैट पर्सन इज बिन ड्रिंकिंग फॉर इयर्स एंड इयर्स. हैवी अल्कोहल डिपेंडेंसी अगर किसी की है तो उनको क्विट करने में बहुत मुश्किल होगा, और जो बेसिकली विड्रॉल वो एक्सपीरियंस करेंगे कभी इतना सिवियर होगा कि दे विल हैव हैलुसिनेशंस एंड दे माइट हैव delusional states as well. तो यहाँ पे it's known as delirium tremens, particularly for alcohol withdrawal states. So here also you're giving these type of medications. उसके बाद drug induced psychosis. Okay. um Psychosis or hallucinations due to drugs. All right, if it is due to overdosage of psychedelic drugs or so on, basically.
अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स एज वेल. ऑर्गेनिक डैमेज जहां पे भी है, जहां पे भी कोई ना कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रॉब्लम ब्रेन केमिस्ट्री में हो गई है या कोई ब्रेन के स्ट्रक्चर में हो गई है, तो वहां पे आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज. Then we have non-organic psychotic disorders. Of course, schizophrenia. Schizoaffective आपके cluster A में आता है of personality disorders. Yes, acute psychosis. You can understand it as a brief psychotic episode now, your schizophreniform and so on. Okay. Mania. Mania आप कहाँ देखते हैं? Bipolar 1 में देखते हैं. Of course, there are going to be mood stabilizers, lithium valproate and all of that. ठीक है, या lithium salts. Maintenance treatment of bipolar disorders. अगर maintenance में है bipolar disorder, we are trying to keep it down. We are trying to keep down mania and we are trying to keep down any psychotic symptoms. Then this is going to be appropriate over there. उसके बाद major depression. If the depression is so severe that there are some psychotic features which are accompanying. अगर depression में भी ऐसा हो रहा है कि there are severe delusions or there are hallucinations or there are very very clear psychotic symptoms, फिर यहाँ पे melancholic features and so on. And then of course delusional disorders as well. ठीक है. So any psychotic symptoms you will basically prescribe antipsychotic drugs. Okay. Then we have antidepressants. The most well known are the tricyclic antidepressants. This imipramine. And this was used by Thomas Kuhn in 1958. ये पूछते हैं आपको एग्जाम्स में. Risperidone, you can actually check इनके pronunciations. A lot of times the people who have invented or the people who generally use these, they like to drag the eyes and all. For pronunciation, I always suggest that you go to Google and it will tell you. वो आपको you can play the voice also. हाँ जी, तो better to check like that. Risperidone. Okay. चलिए, तो Thomas Kuhn in 1958 had first used tricyclic antidepressants. These were quite revolutionary in their time because before that, quite old-fashioned treatments were used. And now they are used for the treatment of depressive disorders. They are very, very, very common. ठीक है? तो यहाँ पे या तो selective serotonin reuptake inhibitors are used, या तो monoamine oxidase inhibitors are used. Very, very common. All right. Now, what is INH? INH is simply iproniazid. Iproniazid. Okay. This is a TB का medicine है ये, तो इससे derive किया गया है. All right. Zeitgeist वाले, मैम हाँ, same guy only, Thomas Kuhn only, same guy. So हाँ, तो very very commonly used drugs, very very commonly used because a lot of people go to clinical psychologists or psychiatrists for depression. Okay, all right. तो यहाँ पे we've got to understand that it's not, ये mood stabilize करते हैं and ये serotonin. Now again, long story short, serotonin hypothesis is not as widely accepted anymore, but it is known कि serotonin का effect जो improve करते हैं medications, वो actually depressive symptoms better करते हैं. Okay, they do help depressive patients. So that is still the most common line of treatment used. In fact, यहाँ पे hypothesis ये है कि सारे कैटेकोलामाइंस यहाँ पे लो होते हैं या मोनोअमाइंस ही लो होते हैं. मोनोअमाइंस में क्या आता है? So you have your catecholamines where you have dopamine, you have norepinephrine, you have epinephrine, and of course you have indolamines in monoamines as well, जहाँ पे आपका serotonin है, which is represented by the 5-HT over here, right? Which is known to stabilize our mood, control aggression, and so on and so forth. Even regulate our sleep-waking function. वो सब चीजें हाँ जी, वो सब चीजें सेरोटोनिन करता है. तो यहाँ पे हाइपोथेसिस ये भी है कि पूरे मोनोअमाइंस यहाँ पे लो होते हैं डिप्रेशन में. तो इट इज अप्रोप्रिएट टू एडमिनिस्टर और टू गिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटिंग, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करती है मोनोअमाइंस को आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में. ओके. एंड वी ऑल्सो डिले सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मतलब हम रीअपटेक प्रिवेंट करते हैं, राइट? वी ऑल्सो प्रिवेंट देम फॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड.
आपको पता है, ये मैंने पिछली क्लास में एक क्लास में पढ़ाया था यहाँ पे कि जब न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, अगर किसी के न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स इफेक्टिव उतने नहीं है, अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, साइनैप्स में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है या तो वापस उनको लिया जाता है। तो वो चीज हम यहाँ सेरोटोनिन और दूसरे मोनोअमाइंस के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं। वी आर प्रिवेंटिंग दैट, एंड बाय वर्च्यू ऑफ प्रिवेंटिंग दैट वी आर बेसिकली इम्प्रूविंग अ पर्सन's मूड, राइट। नाउ वी नो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्सट्रीम लो मूड, suicidal ideation, very very dangerous for the person themselves. Therefore this is an effective way of at least improving the mood, ठीक है। और ये हमें याद रखना है, दिस विल नॉट बी टेकन एज अ रिक्रिएशनल ड्रग बाय नॉन डिप्रेसिव पेशेंट्स। ऐसा नहीं कि आप एंटी डिप्रेसेंट लेंगे तो यू विल फील यूफोरिक या एक्सट्रीम हैप्पीनेस या कुछ, नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, okay. Antidepressants are pretty simple. Pretty simple. Tricyclic depressants are antidepressants are very very frequently used. ये यूज किए जाते हैं. Again, you can take a screenshot of this later. Selective serotonin reuptake inhibitors also. Now, what all do we use this for? We use this for depressive episode with melancholia, ठीक है, या तो electroconvulsive therapy के साथ यूज करते हैं या तो उसके बगैर. Now, even though the safety measures of electroconvulsive therapy has been improved, अब anesthesia देते हैं या फिर they put that thing in the mouth and there's a lot more safety precautions than there used to be. लेकिन ये काफी dangerous है. I'll take a mini class on electroconvulsive therapy for you as well. बट ये ज्यादा यूज नहीं होती है. ओके, दिस इज ओनली इन केस ऑफ वेरी 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 सिवियर डिप्रेशन, and therefore sometimes in extreme cases of major depressive episodes with recurring depression or depression which is not getting better, then we use it along with electroconvulsive therapy, shock therapy भी जिसको कहते हैं. Okay, see, in any depressive symptoms, this is going to be used. आप देख रहे हैं डिस्थाइमिया, साइक्लोथाइमिया, बाइपोलर में भी ये यूज होगा क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम लोज होते हैं मूड के, राइट. Depressive episodes are present in all of these disorders, most mood disorders. Therefore, ये वहां पे भी यूज होगा. Reactive depression क्या होता है? Depression in response to any stressful event in life. या फिर abnormal grief reaction. आप सोचो कि somebody is still grieving or somebody got depressed because of grief. Somebody died and then they are not able to recover for years and years, still depressed. तो उसके लिए भी ये यूज होता है. You see, even for secondary depression we are using this. मतलब ये general medical condition की वजह से है depression. Symptoms depression के हैं लेकिन ये physical condition like hypothyroidism, Cushing syndrome and इस वजह से है. But here also we prescribe, what do we prescribe? Antidepressants. ठीक है. मैम ECT मैंने देखा है. Is it scary? Sounds very scary. All right. And then what do we have? Then we also have, we also sometimes use this for N-neurosis. N-neurosis is bedwetting, nocturnal, diurnal, whatever. ADHD में भी कभी यूज किया जाता है. फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स. आप देखो ये काफी स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज होता है या स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स. 1 2 3. And then where else do we use them? Panic attacks में use करते हैं, agoraphobia, social anxiety, and sometimes in obsessive compulsive disorder, which may accompany depression or which may not accompany depression. Any doubts so far? Please ask. Please ask if there are any doubts so far. Otherwise, we will go on. Ma'am, what is atypical depression? Atypical symptoms, yeah. अब typical depression देखते हैं ना, like your person is walking with a heavy load and all of that. Atypical is symptoms are not very clear, but underlying कहीं ना कहीं depression है. You don't see the core features. The depression is taken very very seriously. अगर आपने कभी general health questionnaire administer किया है या depression का कोई भी scale administer किया है, anything except a 0 we take very seriously. ठीक है, मतलब यू विल सी एंजाइटी के लिए पर्टिकुलर स्कोर होता है. डिप्रेशन में अगर A1 का भी स्कोर आए आउट ऑफ द टोटल, वी टेक इट वेरी सीरियसली एंड वी प्रोव फर्दर. ऑलराइट, dysthymia. Do you know what cyclothymia and dysthymia? They are milder versions respectively.
साइक्लोथाइमिया इज अ माइल्डर वर्जन ऑफ बाइपोलर 2. बाइपोलर 2 का माइल्डर वर्जन है साइक्लोथाइमिया. साइक्लो मतलब लोज और हाइज ऑल्सो, बट नॉट एज सिवियर एज बाइपोलर 2 या बाइपोलर 1. और ये 2 साल के लिए चलता है, साइक्लोथाइमिया और डिस्थाइमिया. डिस्थाइमिया इज लाइक अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, but again low mood persists for around 2 years on most days. And उतना सिवियर जितना मेजर डिप्रेसिव, रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जितने सिवियर होते हैं, उतना सिवियर डिस्थाइमिया नहीं होता है. मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं. दैट मीन्स यू हैव नॉट वॉच्ड द क्लिनिकल कोर्स येट. व्हाट आर वी डूइंग? डोंट वांट टू कवर? डोंट वांट टू कवर? नो? ओके, ऑल राइट, यू डू. बाद में डोंट टेल मी लेटर in MPhil के एग्जाम में I didn't go, I didn't study. And agoraphobia is what? It is a fear of being in an inescapable place. एग्रोफोबिया आपके स्पेसिफिक फोबियाज में से एक है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है. और वहां होता क्या है? अगोरा एक्चुअली मीन्स मार्केट प्लेस इन लैटिन और ग्रीक. एंड देन हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं बेसिकली जहां से हमें निकलना मुश्किल है. चाहे वो क्लोज लिफ्ट हो, चाहे वो एक मार्केट प्लेस हो जहाँ पे काफी सारे लोग हैं, कोई एग्जीबिशन हो, जहां से भी हम एस्केप नहीं कर सकते इजिली. फियर ऑफ सच प्लेसेस, ऐसी जगहों से डरना या ऐसी सिचुएशन में डरना. मे बी सच अ पर्सन विल पैनिक इन अ मीटिंग ऑल्सो, क्योंकि इजिली नहीं निकल सकते. क्लासरूम ऑल्सो मे बी, क्योंकि इजिली नहीं निकल सकते. ठीक है guys, these are basics. If you don't know what these disorders mean, that means you are not doing your homework and you are not watching the clinical course. हाँ जी, you've got to watch it before the new batch starts. You've got to, हमें इतना, I don't know how it is for you in semesters. We used to have to remember the whole criteria and come the next day. Okay, I have not even like मेरा पूरा clinical भी नहीं था. I have done my masters in integrated masters in health psychology, but our professor used to ask us to memorize the diagnostic criteria and come the next day. That's how I still remember the diagnostic criteria. Ma'am, dot, dot, dot. आपको करना है guys. If you want to become good clinical psychologist, आपको symptoms सारे पता होने चाहिए on your fingertips. Okay? And you're very capable and you can do it. आप कर सकते हो, पढ़ना start करो. That is why if you don't want to read books, please watch the classes. Okay? Classes already हैं उस पे. I will ask you to watch anyway before I start the new batch. आपको वो करना है, ठीक है? You got to do that. मैम न्यू कोर्स कब आएगा? जल्दी आएगा जब आप रिवीजन सब फिनिश करके मुझे बता दोगे कि मैम हो गया. उसी दिन में दैट वेरी डे आई विल बी लाइक चलो नया कोर्स करते हैं. रिवीजन जरूरी करना है आपको. मैम कैन आई आस्क यू समथिंग? यस प्लीज गो अहेड एंड आस्क. Mood stabilizing drugs, these are going to be used for bipolar disorder, all mood disorders. ठीक है, ये आप almost सारे mood disorders में use कर सकते हैं. Again, premenstrual dysphoria, dysphoric disorder. Clinical course का link share कर दीजिए. उफ, it's right on my profile. चलो मैं share कर दूंगी. I'll share again. That means we have not started. चलो ठीक है मैं शेयर कर दूंगी. आप क्लास फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आई विल शेयर फॉर यू. चलिए आ जाइए, आ जाइए. आई होप यू गाइज हैड अ गुड दिवाली. चलो नाउ सी क्लियरली, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स आपको मूड डिसऑर्डर्स में यूज करने हैं ना. समटाइम्स इट माइट इवन बी यूज्ड इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सो ऑन. मैम डिप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं ये. डिप्रेशन में ऑफन प्रेजेंट इटसेल्फ विद हाइज ऑल्सो ना. डिप्रेसिव एपिसोड सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड्स नहीं होते हैं, तो देर इज अ मूड इंस्टेबिलिटी ऑल्सो ना. हाँ जी, मूड प्रॉब्लम तो है. सी नाउ इफ यू से लिथियम सॉल्ट्स एंड ऑल दैट ना, ये पर्टिकुलरली हाइज के लिए है, तो इन कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं योर एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स. So, mood disorder typically means, of course, in mood disorder, you also have depressive disorder. But typically, here by mood stabilizing drug, see, what does serotonin do? Improves the mood, stabilizes mood. These are particularly wherever there is a bipolar condition. ये जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स की कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सेरोटोनिन भी मूड ही स्टेबलाइज करता है, लेकिन ये जो कैटेगरी, ये लिथियम सॉल्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये पर्टिकुलरली हाइज के लिए.
Like whenever there is a huge, what do I say, disparity between the mood. चलिए, particularly for the treatment of mania, these are also used for suicide prevention. आपको अगर कहते हैं which is the one medication which is used to prevent suicide, lithium valproate, because bipolar patients have a huge tendency to go ahead and commit suicide. ठीक है, बाइपोलर पेशेंट्स जो हैं ये काफी आपने देखा होगा, दे विल कमिट सुसाइड, वेदर यू टेक मैरिलन मनरो, वेदर यू टेक वैन गो, या वैन गो, द फेमस पेंटर, काफी artists actually they go and commit suicide who've been diagnosed with either a bipolar or showed symptoms of it. If you read case studies also in the book that I had recommended, DSM-5 are made easy. या अगर आप कपलान एंड सैडक पढ़ेंगे, कार्सन की बुक पढ़ेंगे, abnormal psychology, not Carson, yeah, okay. So if you do read it, you will see many case studies where a lot of the bipolar disorder patients go ahead and commit suicide. तो suicide prevention के लिए lithium salts का use किया जाता है, and they have been found to be mostly good. ओके, लिथियम वैल्पोरेट, लिथियम क्लोराइड एंड सो ऑन, तो लिथियम सॉल्ट्स लिख देंगे हम यहाँ पे, दैट्स मोर देन इनफ. सॉल्ट्स यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट. ओके, ये देखिए आप, वैल लिथियम वैल्पोरेट, carbamazepine. No matter how much I try, I forget 5 minutes later. Okay, lamotrigine and then other mood stabilizers as well. ठीक है, ये देखो आप. They can sometimes be used as anti-epileptics also. Lithium carbonate, lithium chloride, and sometimes in combination with benzodiazepines also. Yeah, and anti-anxiety drugs. Yeah, anxiolytics. Ma'am, what is prophylaxis? Prophylaxis is to prevent a condition. ठीक है? प्रोफिलैक्सिस का मतलब है कि हम मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स को एक्चुअली प्रिवेंट करना चाहते हैं. सो लेट अस से इफ लिथियम क्लोराइड इज prescribed or lithium valproate is prescribed to a patient, what we actually want to do is we want to prevent their bipolar episodes. Got it? मतलब हम मैनिक एपिसोड्स को पहले से ही प्रिवेंट करना चाहते हैं rather than controlling them. So that is known as prophylactic action. Prophylaxis, preventative measures or preventive treatment. Really? Okay. All right. Then what do we have? Where is it used? Of course, it's used for bipolar disorders. It's used for manic depressive disorders, schizoaffective disorder, because there's very low emotional expression, bilkul flat emotional expression, very limited emotions actually. Acute mania, only mania also. Aggressive behavior, ये कहाँ पे हम देखते हैं? Aggressive behavior, particularly in mood disorders, mood dysregulation, disruptive dysregulation disorder, frequent episodes of aggression. Okay, unless you read the categories, unless you try to understand the categories, it will not make sense as to what I'm saying. So please do that. That'll be nice. Premenstrual dysphoria, ये नया mood disorder add हुआ है. See, this and this are actually newly added in DSM-5. ये भी आपको करना है. ठीक है? For those of you who know, very proud of you. Lastly, we talk about yes, disruptive mood dysregulation disorder. Correct. Ma'am, why in premenstrual dysphoria? Is it not a mood disorder, Stuti? So, premenstrual dysphoria is not your normal PMSing. People may PMS to the point of, having suicidal thoughts. People may PMS to the point of breaking things. People may have premenstrual stress to the point of having a fight with everyone they know and keep crying for 5 days. It's a diagnosable disorder ना, it's not just कि मूड थोड़ा सा खराब हो गया है. Ma'am, where can I find DSM-5? You you can just download the PDF. If you have it, you will actually find it in your college library or your university library. होगा अगर आपको clinical पढ़ा रहे हैं. You can just photocopy it. I find कि DSM-5 की अगर आपको photocopy मिल जाती है तो वो बेटर है रेफर करने के लिए rather than a computer, because वो आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद रखना है सब. ठीक है? ओके. Tanushree is saying bipolar 1. What, Tanushree?
What happened suddenly? Yes, bipolar 1. What about bipolar 1? Chaliye, all right. The anti-anxiety drugs known as minor tranquilizers. And if I ask you, major tranquilizers is the nickname for which category of drugs? Major tranquilizers हम psychotic disorders के drugs को कहते हैं. Minor tranquilizers anxiety drugs को कहते हैं. ठीक है? 5 TR आ गया ना मैम अब तो. हाँ जी. 5 की कॉपी भी ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है. आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने टीआर रखा है तो आप मजे करो. उतना उतना सीन नहीं है. उतना लाइक दे विल नॉट बाय ऑल न्यू कॉपीज. इफ दे हैव 1 of 5 दैट इज अ बिग डील. ओके. नहीं तो आपको खरीदना है तो आप जाके खरीदो. मैम आई हैव रेड दैट दीज ड्रग्स. Can it be true? Yeah, see, the thing is, honestly, I think all of these drugs have side effects. Okay, I've seen people on anti-anxiety medications, even the ones which are not supposed to have any side effects. And I don't think that the personality of the person is maintained. If you've seen somebody with depression and them on medication of depression, again the personality doesn't remain the same. If you've seen anybody with dementia and medication for dementia, I've interned in a place which used to take care of psychotic patients. They don't remain the same. So are there side effects? There are definitely side effects, but does it actually improve quality of life by allowing them to function better? To some extent, right? I don't think any medication comes without a side effect, right? Whether the pharmaceutical industry chooses to tell you that or not. अपना डिस्क्रिप्शन भी है ना. चलिए, लास्टली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट हियर. चलिए, so here duration of action is 5 to 8 hours. What do we see? We see flowers, 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 but most people when they have especially the barbiturates, they pass out. ठीक है. At least जो benzodiazepines हैं, they're a lot better. If you've seen patients, if you've worked with people, if you know people who have taken these medications, then you know exactly how people behave after they take them. Now, barbiturates are no longer in use. पुराने जमाने के जो drugs होते थे, वो barbiturates use किए जाते थे anti-anxiety के लिए. They basically used to make people pass out. I think Valium also used to be used as a medicine for anti-anxiety. Right? Excessive sedation, नींद आ जाती है. Literally, people would pass out. Respiratory and circulatory depression. Okay. Hepatic enzyme induction. तो काफी dependence, addiction, ये देखो आप, बहुत common है. It a lot of people would get addicted to these. Withdrawal भी होता है इनसे. Rebound, increase in REM sleep. REM sleep का quantity जो होता है, REM sleep की quantity वो बढ़ जाती है. ठीक है. And potential, I told you, these are used for committing suicide. They're probably used more for this than actual treatment, which is very, very sad. Therefore, the sale of these shouldn't be allowed without prescription, but medical shop people generally will sell. तो क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, barbiturates को हम use नहीं करते अब. What is used instead? Benzodiazepines are used instead, right? What else do we have? We know benzodiazepines are the newer treatments. Both of them, see, barbiturates, what did they do? Enhance the function of GABA or gamma aminobutyric acid. That is what benzodiazepines will also do. क्यों? यहाँ पे एक्सेस होती है किस चीज की? नॉरएपिनेफ्रिन की. वी हैव डिस्कस्ड इन द न्यूरोट्रांसमीटर क्लास एंड मेनी फ्री क्लासेस आई हैव टेकन ऑन अनअकैडमी. आप देख सकते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये नॉरएपिनेफ्रिन को कंट्रोल में लाते हैं और ये गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड की एक्शन को इम्प्रूव करते हैं. पर्सन हाई ऑन एंजाइटी विल जनरली बी लो ऑन गाबा. देयरफॉर इनहिबिटरी एक्शन बॉडी में या ब्रेन में उतनी नहीं है और excessive restlessness or irrelevant thoughts, okay, excess worrying thoughts basically take place. So to inhibit and to make the person feel calm, the action of gamma aminobutyric acid is increased or improved. ठीक है. क्योंकि ये लो होता है, क्योंकि इसकी एक्शन ब्रेन में या बॉडी में काफी नहीं होती है. गामा aminobutyric acid is found throughout the central nervous system. It's very very important. It's an inhibitory neurotransmitter. इसकी एक्शन को इम्प्रूव किया जाता है. Just remember that barbiturates have been replaced by benzodiazepine because they're a lot more effective. और ये ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं. Now, what are they actually used for? Of course, panic disorders. ठीक है.
They are used for some sleep disorders as well. जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स, there are specific phobias and so on. Antidepressants are also used for specific phobias sometimes. And that is about it. ठीक है. So they act as muscle relaxants in a way as well, because gamma aminobutyric acid is required for muscle relaxation also, and for calming down and inhibition of action. And for alcohol withdrawal also, they are. With that, we have discussed our disorders and the medications. Like I said, I will explain the different classes of drugs to you as well. लेकिन आप रिविजन स्टार्ट कीजिए प्लीज. मैम पहले वाला कमेंट अभी गया, सॉरी, नो प्रॉब्लम. मैम कोल्ड एंड कॉफ सिरप्स also have similar composition. True. Cough syrups actually are addictive, and a lot of companies, I think, want to make them that way. Cough syrup should be taken with a lot of precaution, especially in high doses. Ma'am, my comment. 1 minute. Sukanya, I don't see anything. My comment तो है ही नहीं. Guys, does anybody else see Sukanya's comment? I do not see anything. Sukanya has only asked, ma'am, can I ask you something? मैम लिंक शेयर कर दीजिए. You see both my hands. अभी मैं करूंगी, रुको आप. Okay, I'll do it in the group. मैं group में करूँ, or do you want me to share over here? धर्मिष्ठा, यहाँ पे करूँ मैं, ग्रुप में करूँ? मैम मुझे कोल्ड कॉफ हुआ है बहुत ज्यादा. आफ्टर टेकिंग सिरप आई एम ओनली, या कॉफ सिरप एक्चुअली मेक्स यू really drowsy, and sometimes it makes you have bad dreams also, so please be careful. Ma'am, some people take cough syrups like tea coffee on a daily basis without prescriptions. Those are known as addicts. Ma'am, PGT GATE एग्जाम कब तक होंगे? गेट आपका फेब में होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है. पीजीटी का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है. जब अनाउंस होगा तो मैं डिस्कस करूंगी आपके लिए, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम. सुकन्या, यू मैसेज मी, आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू. Chalo guys, have a great rest of the day. I hope you're still enjoying your Diwali and all that. I will see you guys tomorrow. Baki, I'll share the links to the course. And like I said, if you want me to start off the clinical course quick, we'll cover everything. Disorders and all of that. Um, that's about it. Have a great day ahead. If you like the class, please like, share and subscribe and support the channel, and let me know what else you would like to see. ठीक है, आप request कर सकते हैं and I'll definitely take it up. Leave it below in the comments. Bye bye. Have a great day.